Assalamu alaikum, my dear girls and boys of class 5. How are you all? I hope all of you are doing well at your homes. Students, myself Fatma Zaid and I welcome you to another video lecture of social studies. It's a lecture number 15 and today is 18th June 2021 and it's Friday. Okay students, as you know that recently we have completed our lesson number 4, which is means of communication. So in this class we are going to revise the question answers of this lesson. So let's get started. Okay, well, students, 3 question answers of this lesson. The question number 1 is, name the various means of communication that provide information to us. वेरियस मीन्स आपने कुछ ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताना है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. आपने उनके नाम बताने. सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ़ यू नो कि कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जस्ट लाइक हम टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो एक्सेट्रा. सो हाउ यू विल राइट द क्वेश्चन आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to take line from the question. Okay, you will, just like I have underlined the portion, just like the various means of communication that provide information to us are. आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन में से लाइन लेंगे. the various means of communication that provide information to us are, then after that you will write in numbers the different means of communication, just like you can write letters, television, telephone, radio, newspaper, mobile phone, any other means of communication that provide information to. Okay, clear? Okay ji. Now move on to the question number 2. What are the differences between social media and mass media? Students, as you know that we have studied in detail that what is social media and what is mass media. So in this question you have to write the difference between both these types of media. Okay, so first of all you have to take line from question, just like I have underlined. The difference between social media and mass media are. आफ्टर स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में डिफरेंस लिखते हैं तो हम उसको सब कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं ताकि वो अट्रैक्ट करे पढ़ने वाले को भी और आपके लिए भी ईजी टू लर्न. ओके, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज यू कैन सी दैट आई हैव मेंशन्ड सोशल मीडिया एंड ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज द मास मीडिया. सो आपने दोनों में डिफरेंस बताना है. हियर आई हैव रिटन 2 पॉइंट्स एज एन एग्जांपल. सो यू हैव टू राइट एट लीस्ट 3 to 4 points. Okay, just like number 1 is सोशल मीडिया के इट इज़ 2-way कम्युनिकेशन. हम दो तरफ से कम्युनिकेट करते हैं. जस्ट लाइक अगर हम कोई मैसेज करते हैं हमें फौरी से उसका इंस्टेंटली रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये क्या 2-way कम्युनिकेशन. ऑन द अदर हैंड साइड इफ़ यू टॉक अबाउट मैस मीडिया, सो इट इज़ 1-way कम्युनिकेशन. जस्ट लाइक टेलीविजन अगर हम देखते हैं, हम रेडियो सुन रहे हैं, तो 1-way कम्युनिकेशन होती है ना. हम जस्ट सुन रहे हैं, हम उसको फौरी से इंस्टेंटली रिस्पॉन्स तो नहीं कर रहे होते ना. येस, सो इट इज़ नॉन एज it is one-way communication. Okay, so next difference is social media refers to computer-based technology that enables users to create and share content. ये basically ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ कर हम अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, ख़ुद से अपना कंटेंट बना सकते हैं. और अगर मैस मीडिया की बात करें तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि अपने इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना, अपनी बात को ज़्यादा तादाद में लोगों तक पहुंचाना किसका काम है? यस, मैस मीडिया का मेन पर्पज़ ये है कि अपनी बात को, अपने मतलब किसी भी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को ज़्यादा तादाद में ऑडियंस तक पहुंचाना. ओके, these are just 2 points as an example. You have to write 1 or 2 more points. Okay, now move on to the question number 3. Write down the few disadvantages of media. आपने मीडिया के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बताना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किस तरह से करेंगे. द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ मीडिया आर. स्टूडेंट्स, हियर आई हैव रिटन जस्ट 1 point as an example. You have to do this question by your own. You can take help from your internet, from your book or any other source. Okay, I have written the 1 point which is it is wastage of time. All you know that we waste a lot of time on media. Just like mostly हम social media अपना बहुत सा टाइम वेस्ट करते हैं. सो एक डिसएडवांटेज ये हो गया मीडिया का.
और भी बहुत से डिसएडवांटेजेस लाइक इस पर हमें बहुत फेक न्यूज़ भी सुनने को मिलती हैं हमें, एक तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और भी बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं. यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर ओन. यू हैव टू राइट एट लीस्ट 4 to 5 points. Okay, students, you can take help from your internet, from your book, or any other source of media. Okay, well students, now your diaries, you have to learn question answers of lesson number 4, which we have done in the class. Okay, well, that's all about today's lecture. See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.